Welcome everyone, those who are joining now this session. Good mornings and good afternoon to everyone. So welcome everyone for this important session of ISWAN Talks series. ISWAN Talks is just a platform we have organized so that we can directly interact with our seafarers and give them some more information, some more knowledge about various topics. And in the past we have done a various number of on the subjects such as physical well-being, mental well-being. We have given advices to seafarers about how they can look after their physical health on board, what they can do with the diabetes, what they can do with the blood pressures on board, and how they can take care of those particular issues when they're sailing, and how they can prepare themselves before they go on board ship as well. And even we had a session with the Gujarat Maritime University, who they talked about basically around the fraudulent crewing agents and how the seafarers should choose their right RPSL agents and what is the importance of the RPSL. So what a lot of different topics we have discussed in the previous sessions. And this session we are going to be discussing something about the piracy, the maritime piracy and its impact on the seafarers and families. I'm not sure how many of you are aware about that, but I myself have been held captive in Somalia for about 8 months in the year 2010. That was about 11 years back. It's been a time, but that horrific incident still is quite disturbs us. Is very problematic for our families. It was one of the very disastrous time for a seafarer's life, and not only for a seafarer but also their loved ones at home, their friends, the families, the relatives. Everybody was concerned about that, and this is what we'll be just highlighting something in this session about what you can do about it, and how you can prepare yourself well before you join a ship, and all that. So that's the way our this thing. And as I shared, we'll have our guest today as one of the Mr. Aman Sharma, who will be joining us in about 15 minutes from now, and he'll be sharing his ordeal he has suffered while he was there in captivity for about 4 years in Somalia. Yes, you heard it right. He was in captivity for about 4 years, and that's a pretty long period of time. So guys, just wanted to give you a brief introduction about what do you actually mean by piracy and what do you mean by armed robbery. So these are two terms which have been widely used: piracy, maritime piracy, and armed robbery. But they have a very important difference in them. See, maritime piracy is basically an act of aggression on the ship or the crew by a foreign body such as the pirates, and it happens in the high seas. If such an incident happens in the high sea, it is termed as maritime piracy. Whereas if such an incident of an attack or a threat emerges in the territorial waters of a country, then it is known as armed robbery incident, because the country has to protect its border and is obliged to protect its border. So these are some of the differences. You should be able to also find out something on the Google as well. When you type something about UN clause, if you read a little bit about UN clause, you will get some more difference about it. But this is very important stuff which you should know. And if I talk about what is the scale of problem, we all understand that Somali piracy was at its peak in the year 2011, 12, 13. That was at the peak of Somali piracy. But after 12 and 13, the piracy incident starts dropping down. And today, we don't have any active seafarers or the vessel in captivity of Somalia, which is extremely good news. But what do we need to do? Shall we stop taking any kind of precautions when we are transiting to high-risk waters? The answer is no. We need to still be vigilant. We still need to follow all the right practices we need to do while transiting to high-risk waters. And why do we need to do is because the pirates still pose a threat. They still have that opportunity, and they can still come at sea to attack the vessel. Okay, so that's why we have to be very vigilant. We have to prepare our vessel, and not only the vessel, but also we have to also prepare our fellow crew members who will be joining us, who will be sailing with us, to ensure that they are aware on what steps needs to take in case there is an attack on the vessel, in case you find something suspicious
activity nearby vessel, what are the steps you need to take? So we need to have the proper drills in place. We need to have proper follow-ups on board needs to be done. The senior seafarers, the senior rank seafarers, and also even junior ranks, everybody has a responsibility to play at that part. But somehow some of your seafarers may do all the right practices before, but then during the time of crisis it could happen that some of you may feel very, very vulnerable. Some of you may not be able to understand what's going on right now. The life situation is very different. When you have been seeing the pirates coming just near to your boat, they are just coming very close to your boat and they're trying to fire on board vessel. There's extreme fear and threat which you try and analyze, and in that scenario some of the seafarers may feel threatened and they might not be able to do what they have to do, and so therefore some other seafarers from the ship will have to take on their responsibilities as well. So we need to prepare our mind as well, not only the physical body but also our mind, to also look after some of these incidents when they happen at sea. And how you can do it, before even you join a ship, you need to also look at that what we can do about it. What are the routes my ship is going to be taking? What all the company, how the company is preparing themselves to tackle some of these things. What kind of trainings are being given to the seafarers when you'll be joining the ship, or even before? How are you prepared well enough to tackle some of these difficulties when you face at sea? So all these some small questions you need to ask yourself before you really choose where you want to go, on which ship you want to go. There are very less chances, because you see the trading pattern of the ship is very wide. Sometimes you could be in the North American region, sometimes you could be somewhere in China or Southeast Asia, sometimes you could be in Africa. It could be very different trading pattern for some of the ships. So that's why you cannot choose many of the times that which trading pattern I need to go. So you have to be prepared. The answer is that if you are prepared well, you understand that how I can prepare my vessel and what are the resources I need to utilize in order to prepare my crew well as well. So that will really help you. And what are that things are there that your companies will also have a policy in place. You need to refer that policy. You need to refer that risk assessment needs to be done prior you do enter such kind of areas. So where do you find that information? That is what you have to do when you go join a ship, to find out more information about how do I mitigate that particular risk which arise when you transit through such kind of high risk waters. What are the company's policy around it? Whether the company will give us the armed guards or do not give an armed guard, all that things you need to check as well. And at the same time, you just cannot rely on that. You still ensure that each and every crew member on board ship, whether what your rank is, like even if you're a junior rank or a senior rank, whether they have been trained well enough to tackle that kind of situation. All these things has to be done. And then practical training is very important, because it could happen that you might have been given a training ashore, but when you go on board ship, the things could be different. Every ship has a different state of affairs, and then you may find that some of the ships may have a different system altogether. Some of the ships may have different doors, and entry doors may be different, or exit doors may be different. So all that is dependent on ship to ship basis. So when you go on board ship, make sure that you carry out proper drills and safety routines, and ensure that you understand what you actually mean by citadel. Citadel is one of that areas on board ship where you will be able to go with, where entire crew must muster in, and that has been locked. That is one of the safest place, because that's been sealed, and hopefully the pirates will not be able to enter it. But you should be able to ensure that the communication systems inside the citadel is working, so that you can communicate with the outside world, and as well as you have the right rations in place inside the citadel, so that the crew members can, if they are going to be staying there for about 1 or 2 days or 3 days, you have sufficient food for them. Whether they have access to the toilet within the citadel, that is also important. That all these pre-checks needs to be done before you really enter into the high risk area. So that's why your
Saturday routines, your drills become extremely necessary in all of these scenarios, that you keep checking whether my systems are working or not, my VHF are in proper order or not, what are the systems I need to put in place so that my entire crew is aware of that. Some of the precautionary measures you need to take. What are the company's policies are there, you need to follow those things as well. Always remember that you have best management practice. Now part 5 is already there, and also best management practice for Gulf of Guinea is also there. Just download them from your Google. If you do not have a hard copy of them, you can just Google it, download it, read it. 10 minutes of your time, that's all you need to take, but you will not regret it later that I was not aware of it, or I do not I would not, if I would have seen it before, I would have done much more better more. So think about it. It's all about, what you're trying to buy time. Suppose a pirate boat is coming in. What you can do is about, when the pirate boat is approaching to your vessel, if you need to buy time from that boat, so that the international navies or the law enforcement agencies can come and rescue you. In certain scenarios, what happens that the seafarers becomes numb. They don't understand what exactly to be done in that scenario, and at that time, the ship becomes extremely vulnerable. And the pirates will say, "Thank you so much for inviting me," and they will just board the vessel, and they will and you will get into captivity. So all these things you can and the ships and the seafarers have done extremely wonderful work by ensuring that they follow the right maneuvering patterns, by ensuring that that they have alerted the nearest naval vessel who came in for their rescue, and seafarers have been saved as well from that kind of scenario. So these things depends on your preparedness, your awareness, and how you are able to mitigate the risk on your vessel. So these are some of the precautionary steps that you can always take before you really join ships, and when you're on ships, before you enter into the high risk waters. Now the second question is, when the boat arrives, and if by any chance, you need to also ensure that you are reporting that incidents to the right authorities. Reporting of any suspicious incident is very crucial, because it not only puts your ship in danger, but also the ships which are nearby in vicinity will also be in the danger if you do not report that incident to the law enforcement agencies or the medium which has been established for that particular region. So ensure that even if the boat doesn't harms you, but you find it suspicious, you find that the trading pattern or the how the ship is coming closer to your ship is in suspicious activity, you need to alert the enforcement agencies before you take any other step. That's very crucial. And if by any chance your ship has been boarded by pirates, and unfortunately they have come on board, and you are now in a state of captivity, always remember that you do not offer any kind of resistance to the pirates. Treat them as they are your guest. Yes, you heard it correctly. Treat them as they are your guest, because they have the guns, and as a seafarer, we should not get into any kind of conflicts with them. We have seen seafarers in the past how they have suffered. We have been dealing with cases in the past how the seafarers have been got injured because of the gunfight or the conflict between the pirates and the seafarers. We do not want that to be in that condition, because we have been kidnapped, and obviously if you maintain the right steps during a captivity period, everybody has come back home. And so that's the lesson what you need to do, that don't resist, instead stay united with your colleagues, obey, follow the hygiene, follow the hierarchy of rank. That is very important. The pirates might not allow you to talk to each other. Pirates might not be willing to share, allow you to do some activities, but that should not hamper to your mind to actually be also kidnapped by the pirates. Your mind can always work. You can always do some mind activity. Think about your good times with your family. Think about what you want to do in the future as well after you will be released from that captivity. A lot of things can be done, by just maybe the pirates may allow you to do some yoga or meditation. That can also help you to look after your mental health.
because every day there could be a issue regarding how the pirates are going to treat you, or the pirates are going to not respect your dignity. So these all things can be very natural to come in, but at the same time, if you are able to look after your own well-being and health, and also your fellow colleagues, things can be a bit different while in captivity. So the bottom line is that do not resist, obey to the pirates, maintain hierarchy of rank, stay united, do not argue, support each other, and all of you have gone as one, and hopefully everybody will come out safely from that piracy. See, understand, the pirates do not have any other intention but just to go after the money. And we were talking about the Somalia, but if you look at even in the Gulf of Guinea, the piracy incidents of the last, if you look at the IMB, the International Maritime Bureau annual report from the last year, there's only 132 incidents reported in the entire world, which is the lowest number of incidents since 1994. That means a lot of steps have been taken by international navies to combat these piracy incidents across the world, not only just in Somalia, but in Gulf of Guinea. If you will see, there have been very, very fewer incidents this year as compared with the last year, which is very extremely good news. A lot of steps have been taken in that regards by the regional partners in the regional navies which are existing in the Gulf of Guinea. Indian Navy is also going there now in the Gulf of Guinea. That's also been announced. So a lot of these steps have been taken by the governments across the world to support seafarers and to support the shipping industry and the trading, so that they do not suffer because of the piracy incidents. And our role is to protect our ships, support our crew members while they are in difficulty. It could be possible that in one of the days, one of the seafarer may feel a bit low in emotional support. They would need better. But what you can do is you can try and support them, that yes, we will go home and we will be back home at our home. Just remember the good times and things will fall in place. In Gulf of Guinea, seafarers have been held in captivity for about 4 weeks to 6 weeks, but they have returned home safely as well. And the pirates have been, yes, they have been very violent, no doubt in that. Seafarers suffers a lot in that incidents, but the bottom line is that everybody has come home safely. So do not risk your life by having any kind of arguments with the pirates or any kind of conflicts with the pirates. The families, on the other hand, if you look at that part, the family suffers a lot. They go through a lot of emotional trail in the entire, because they do not know what's happening with you when you are in captivity. So it's important that before you join ship, you give some kind of information to your families, that so that they do not rely entirely on the internet. So they can have means of ways that how they can support themselves. What they need to understand, that the intention of the pirates is not to harm or to kill anyone. You will be released if you've gone on a good company. The companies will definitely take care of your release as well as your welfare post release as well. A lot of companies have taken excellent care of the seafarers and their families, no doubt in that. But at the same time, you need to be ensured that you give the proper advisory to your families, your loved ones at home, so that they do not suffer by searching which company are you sailing with, how to contact them, who are the people, do you mean by union or a welfare charity such as ISWAN. So if you give some kind of information to your families before you join ship, that is very useful and helpful, so that they are been taken care of by these organizations. It's very crucial that you can bring in some kind of information, maybe prepare a kind of a checklist for your families, or give kind of an information list to your family, that these are the organizations you can refer to, or these are the contact details you can refer to. We face any kind of difficulties at sea, or you want to contact them. That's very, very important that you can take care of that as well. So that was a brief about myself, because we have seen the families how they suffered during the entire incidents. They have run, some of the families, they have run from pillar to post, because in some cases the seafarers were abandoned while in captivity, and in those cases the families have to actually rely on charities such as ours to get some kind of support. They had no money to pay for the food, or the children were not able to get to the schools. Education was stopped at all, and the families were very
were not able to come out even from their home, because the relatives, the neighbors will just not allow them to do any other activities, right? So that's why it's very important that we take care of our families, we give them the proper information so that they do not suffer shall we face any kind of difficulty. The last line from my end is that in any all of these scenarios, if you look at, as I said, the incidents are dropping, they are the lowest now, and the probability that any of the seafarer would be hijacked or kidnapped by the pirates is very, very low. So that should not be, deter us from being complacent about this matter. We should still be vigilant. We should still follow all the right practices when we are at sea, and ensure that our crew are well prepared before prior they really enter the high risk areas. So that's sort of from me, and I would now like to take this opportunity actually to invite our guest who is waiting here, Mr. Aman Sharma. Aman is a former hostage in Somalia. He was there for 4 years in Somalia, and he has been he has been sailing right now. He's very, very you can say when I think it was his first ship when he went there, and he was held in captivity for 4 years, as I said, but he displayed utter professionalism during his captivity days. He ensured that he looked after his crew members very well. Even he looked after his seniors during the entire 4 years of captivity. We are very thrilled that he'll be joining us in a short while from now. After release, I was there for his release when he was been released in the year 2014. I went to not only for him but also for his fellow colleagues, who were 7 Bangladeshis, 1 Iranian, 2 Sri Lankans from this vessel, which was released in the month of July, I think June or July in 2014, and they came home. Yes, we have Aman here now, so the utter professionalism in the entire is really highly appreciated. Thank you, Aman, for joining us today. We're very thrilled. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon to you as well, Aman. Kaise ho? All good, sir. Very good, very good. Aman, thank you first of all for joining, and I know you have been very, very busy, and really highly appreciate the way you have conducted yourself in the entire incident of piracy. And आप हमारे बीच में आज आ रहे हैं सभी लोगों को आप you will be able to give a small brief presentation about how you suffered in captivity. We are really thankful to you for doing that, Aman. Thank you to you, sir. तो आप अपना थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप वहाँ पे किडनैप हुए, हाईजैक हुए, और कैसे आप फिर आगे. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम अमन कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और 2010 में मैंने शिप ज्वाइन किया था. शिप का नाम था NBL विडो, और मैंने ज्वाइन किया था 18 अक्टूबर 2010. मेरा मेडिंग वॉइस था, फर्स्ट शिप था. तो दुबई से मैंने ज्वाइन किया. सो फर्स्ट पोर्ट था कराची, एंड सेकंड पोर्ट था मेरा ईरान, एंड थर्ड पोर्ट था दुबई. सो दुबई से डिपार्चर हुआ. उस टाइम हमारा रूट चेंज हो गया, तो हम केनिया मोम्बासा की तरफ निकल रहे थे, और पायरेसी का उतना पता भी नहीं था क्योंकि फर्स्ट शिप था. तो हमारे बात कर रहे थे, इतना मालूम नहीं था, लेकिन फिर हम निकल लिए. तो नियर द मालदीव्स हमारा शिप हाईजैक हो गया 26 नवंबर 2010, मॉर्निंग टाइम 0715. जब पायरेसी अटैक हुआ हमारे शिप पे, तो हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ पायरेसी अटैक है, चलो कोई बात नहीं. बट व्हेन दे अराइव एंड केम ऑन बोर्ड, उसका ऐसे देखे नहीं थे कि पायरेट्स भी होते हैं. उनके ऐसे पतले थे ना, उन्हें कोई खाना पानी. उनके हाथ में AK-47, जो स्किफ बोट हमें अप्रोच कर रहा था वो सनराइज की साइड पे कर रहा था, तो हम फोकस नहीं कर सकते थे लुकआउट के लिए. जब वो शिप के पास आ गए, हमने स्पीड भी इंक्रीज किया, जिग जैग भी किया, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ हमें, और वो बोर्ड कर गए 3
4 पर्सन थे टोटल, 4 पायरेट्स एंड 1 हेड कमांडर इंक्लूडिंग दैट। सो 3 के पास AK-47 थी, एक के पास लाइट मशीन गन थी। तो वो ऑन बोर्ड हो गए, तो हमने मतलब सारे डोर वगैरह क्लोज किए और ब्रिज पे चले गए। जब हम ब्रिज पे चले गए उस टाइम हमें कुछ पता नहीं होता था क्या सीटाडेल क्या होती है, पायरेसी ड्रिल क्या होती है, क्योंकि वो हमारी कंपनी का एक ही शिप था, वो मलेशियन कंपनी थी और ईरानियन ऑनर था। तो हमें कुछ पता नहीं, हम ब्रिज पे चले गए, हम देख रहे थे क्या हो रहा है। तो वो हमने सारे दरवाजे अपने मतलब डोर जो भी इनक्लोज स्पेस सारे क्लोज कर दिए थे। तो वो फ्रंट लैडर से ब्रिज पे पहुंच गए। फिर हम उधर से भागे, हम इंजन रूम में भागे और कैप्टन और थर्ड ऑफिसर वो जो अपने ऑफिस में बैठ के वो मेल वगैरह कर रहे थे ऑनर को। बट एक्चुअली अभी टचवुड अभी मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं डिफरेंस करता हूँ वो टाइम क्या था 2010 का और आज, तो दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो उसके बाद वो दोनों कंपनी को मेल करने लगे, बट एक्चुअली प्रोसीजर क्या था कि हर किसी को सिटाडेल में होना चाहिए था उस टाइम। बट हम 23 क्रू मेंबर थे टोटल, 21 सिटाडेल में थे इंजन रूम में, और 2 पर्सन थर्ड ऑफिसर और कैप्टन वो अपने ऑफिस में कंपनी को मेल कर रहे थे। इवन एक बंदा भी बाहर रह जाए तो सारा क्रू का सिटाडेल में होना बेकार हो जाता है। तो वैसा ही हुआ, फिर उन्होंने वो गए नीचे, उन्होंने डोर वगैरह तोड़े, कैप्टन थर्ड ऑफिसर को ढूंढा और उन्हें ब्रिज पे ले गए, उन्हें टॉर्चर करने लगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद ये अनाउंसमेंट हो गया, ऑल क्रू कम टू ब्रिज, कैप्टन एंड थर्ड ऑफिसर अंडर पायरेट एंड अवर वेसल इज अंडर पायरेसी अटैक। तो पहले हमने आधा घंटा किया नहीं, फिर वो कैप्टन को टॉर्चर वगैरह करने लगे और फिर हमें बुलाया तो हम चले गए, क्योंकि एक हमारे सब की वजह से वो दोनों उनको मार देते, इसलिए हम चले गए। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा है वैसा है। हम भी सुनते रहे, फिर हम उन्होंने बोला कि एक हमारा मदर वेसल है उसके पास जाना है। तो नियर टू मालदीव्स 200 नॉटिकल माइल उन्होंने हमारा वेसल अटैक किया और वो हमें लेके गए सोमालिया 1400 नॉटिकल माइल। जब उन्होंने अपने मदर वेसल बताया कि ये हमारा मदर वेसल है उसके पास जाना, जब हम वहां पे गए तो उधर 18 पायरेट्स और थे, 1 हेड कमांडर और था उनका, और उनके एम्यूनेशन, वेपन, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर सारा कुछ। फिर वो हमने लिया, उन्होंने 23 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग कैप्टन को ब्रिज पे रखा और 1 दिसंबर को सोमालिया में एंकर डाल दिया नाइट को। फिर उसके बाद वो आते गए, उनके कोई हेड कमांडर होते हैं कोई कौन, तो वो आए, उन्होंने बोला कि हमारी डिमांड इतनी इतनी है। कैप्टन ने बात किया ऑनर के साथ, तो ऑनर बोलता ठीक है। फिर आते आते ऑनर और कंपनी की नेगोशिएशन चलने लगी। तो नेगोशिएशन ऐसे 3-4 महीने चली। इनकी डिमांड थी $20 मिलियन और ऑनर पे कर रहा था $1 मिलियन। इनका कहीं सेटलमेंट नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने थ्रेटन किया, इफ यू डिडंट पे रैंसम अमाउंट वी विल किल योर 5 क्रू मेंबर। तो कैप फिर ऑनर इनके साथ टच में था, बट ये इन्होंने क्या किया, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, बोसन और 2 और क्रू मेंबर उनको बाहर ले गए शिप से निकाल के जंगल में। उधर भी उनको टॉर्चर वगैरह करते रहे। उन्होंने बोला, ऑनर को बताया कि हमने आपका क्रू मेंबर मार दिया है, लेकिन ऑनर ने उनको कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो 15-20 दिन के बाद वापस फिर ले आए। जब वापस ले आए तो पायरेट्स भी एंग्री थे। ये भी ऑनर और पायरेसी के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या मतलब आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ, इन्होंने फिर 5 दिन का टाइम दिया, क्रू मेंबर को मार देंगे। तो एग्जैक्ट 5 दिन के बाद हम 2 इंडियन थे, 6 श्रीलंकन थे, 7 बांग्लादेशी थे, 6 पाकिस्तानी थे और 1 ईरानियन था। हम टोटल 23 क्रू मेंबर थे। तो पहला उन्होंने, जब हम सारे इकट्ठे बैठे थे, 15 जून 2010 की बात है, सॉरी 2011 की, जब सारे इकट्ठे बैठे थे, हम 2 इंडियन से हम इकट्ठे थे, तो उसका नाम था राजू प्रसाद राजभर। उन्होंने उसको उठाया, बाहर ले गए ब्रिज पे और उसे हमारे सामने शूट कर दिया, 3 बुलेट ऑन हिज चेस्ट। तो उस टाइम तो हम विश्वास कर ही नहीं रहे थे, बट जब हमने देखा मतलब उन्होंने उसे शूट कर दिया है, still I can't imagine that situation, you know. That time was really terrible time was for me. और उसके बाद स्लोली फिर, अब ना तो पहली चीज थी, ना तो उनकी लैंग्वेज जानते थे क्या बोल रहे हैं वो, दूसरी चीज उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। मैं हर किसी को यही बताना चाहता हूँ, भगवान ना करे कि किसी का शिप हाईजैक हो, यदि हो भी जाता है तो फर्स्ट थिंग की कोऑपरेट करो जितना हो सके आपको।
वो बोले बैठो तो बैठ जाओ, वो बोले चलो तो चलो। एक ही सबक सीखा मैंने वहां पे कि जैसे वो बोले उनको कॉपरेट करो, आपकी कुछ भी नहीं चल सकती। जैसे कैप्टन फिश मूवी में आई एम द कैप्टन, तो सेम बात होती है कि वही कैप्टन होते हैं उस टाइम, उनकी सुनो, उनके हिसाब से चलोगे तो अपने आप को सेफ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और अपना हमेशा ये मत देखो कि नहीं मैं कैप्टिव हो गया, मैं नहीं बचूंगा या मैं नहीं जा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो, फैमिली का भी सोच के चलो। डोंट फाइट विद देम, डोंट आर्ग्यू विद देम, जस्ट कीप मोटिवेट योरसेल्फ एंड गिव पॉजिटिव होप टू योर फैमिली आल्सो। सेकंड थिंग, जब आस्ते आस्ते 6 मंथ कंप्लीट हो गए तो फिर उन जैसे वो खाना वगैरह बनाते थे उनके साथ मैंने फ्रेंडशिप की, उनका मैंने असिस्ट किया, हेल्प किया खाना वगैरह बनाने में। तो आस्ते आस्ते उनके साथ दोस्ती किया। ये नहीं कि मेरे को नहीं मारेंगे, तब भी वो टॉर्चर करते थे, लेकिन इतना था कि एटलीस्ट मैं उनके टच में हूँ, उनकी लैंग्वेज जान सकूं, वो बोल कर रहे हैं मैं समझ सकूं, इतना था। तो स्लोली स्लोली फिर बाद में उनकी कहीं पे डील सेटल हुई ऑनर की और उसकी। तो बाद में उन्होंने बोला कि $1.85 मिलियन के साथ, ऑनर ने बोला, और पायरेसी का था $20 मिलियन। तो लास्ट में जब पैसा देने की बारी आई तो उसमें से शायद $1 मिलियन पाकिस्तान ने फंड इकट्ठा किया था। फिर आज जैसे डील चलने लगी तो कैप्टन बोलता कि मैं, ये हमारा इतना शेयर इकट्ठा किया, लेकिन बाकी बोलते थे कि ये हमारा शेयर है, पाकिस्तान बोलता ये हमारा है। जब लास्ट में देने की बारी आई तो ऑनर बोलता कि ठीक है सारा पैसा मुझे दे दो, हम शिप को रिलीज करवाएंगे वहां से। तो जो पाकिस्तान एनजीओ ने इकट्ठा किया था पैसा, वो बोलती ये शिप का और 23 क्रू मेंबर का पैसा है, हम आपको नहीं दे सकते। तो लास्ट में उनके आपस में कुछ उनके आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ना उसको शेयर दिया पैसा। तो इन्होंने फिर लास्ट में किया कि थर्ड पार्टी को दे दें शिप को और अपने बंदों को छुड़ा के ले आए। तो ऑनर बोलता नहीं मेरा जहाज है मैं छुड़ाऊंगा। फिर इनके आपस में कोई खिचपिच हो गई। वैसे डील फाइनल हो गई थी 2012 में $2.85 मिलियन से। 1.85 ऑनर दे रहा था और $1 मिलियन पाकिस्तान एनजीओ जो इन्होंने कलेक्ट किया था। लास्ट में ऑनर डिसअपियर हो गया। जब ऑनर डिसअपियर हो गया तो कैप्टन पाकिस्तानी, तो कैप्टन बोलता पाकिस्तान का पैसा रेडी है, ऑनर नहीं दे रहा तो हम पाकिस्तानी को छोड़ दो। लेकिन उस टाइम हम टोटली मतलब अपने आप को जैसे अनाथ फील कर रहे थे, ऑर्फन। क्यों? क्योंकि कैप्टन 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 था, कैप्टन हर किसी से बात करता था, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, एनजीओ गवर्नमेंट से, हाई अथॉरिटी से। जब लास्ट में कैप्टन ने फंड इकट्ठा किया सबके लिए और लास्ट मूवमेंट में वो बोलता है ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान को छोड़ दो। पायरेट्स के दिमाग में, पायरेट्सों के दिमाग में इतनी बातें डाल दी कि ये इनका पैसा है, सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़ो। अब इंडियनों ने अभी बात ही नहीं चालू की, बांग्लादेश वालों ने अभी बात ही नहीं स्टार्ट की, तो हमारा कौन था? उस टाइम 2.5 साल ऑलरेडी हमारे पास हो चुके थे, हमें कुछ भी होप नहीं थी। फैमिली के साथ हमारा टच था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऑनर को फोन करो, ऑनर फोन नहीं उठाता था घर वालों का। तो मतलब मैं तो इंडिया का फिर अकेला रह गया था। तो मेरी फैमिली मतलब अपना गवर्नमेंट हर प्लेटफॉर्म पे मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है। तो 2013 तो फिर उसके बाद जब कोई नहीं था हमारा तो गवर्नमेंट ने भी हेल्प कर रही थी। लेकिन आपको पता गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है वो एस्केलेशन के मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पीएम को मिल सकते हैं, इंडिया में तो नामुमकिन है जैसे नॉर्मल इंसान के लिए। फिर उसके बाद मिस्टर चिराग सर आए, जब ये भी कैप्टिव थे। फिर जब ये वापस वहां से आए तो उन्होंने मेरे फादर ने और मॉम ने इन्होंने रिपोर्ट वगैरह न्यूज वगैरह में दिया था। तो चिराग सर ने मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया, तो इन्होंने होप दी कि आप चिंता मत कीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व इट सून। तो आस्ते से चला, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बताया, मेरी फैमिली ने बताया कि कोई है, वो हमारी मदद कर रहे हैं और आप चिंता मत करना, उनसे लड़ाई मत करना, एक जगह पे रहना और हम आपको जल्दी लाएंगे। तो मैं भी घर वालों से ये बात बोलता था, आप भी चिंता मत करना, मैं इस जगह पे हूँ, इस जगह पे हूँ। मैं जितने बड़ी सिचुएशन में था, लेकिन हम घर वालों को भी नहीं बोल सकते कि हम ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉर्चर नहीं होता आजकल। नाउ आई थिंक सो 7 year ऑलमोस्ट फिनिश, still people are asking me they was torturing you. I said no, they was pirates, only just little bit. But because cannot say front of family yes they was torturing me, right?
तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब कुछ अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं कि रियल लाइफ क्या है, और मतलब एक मतलब सुनना, इमेजिनेशन करना क्या चीज है। रियल लाइफ वही बंदा बता सकता है जिसने उसको फेस किया हो, और इमेजिनेशन तो हर कोई किसी की स्टोरी सुन के बता सकता, हाँ कोई अमन था या कोई चिराग था, ऐसी बात हुई थी, बस इतनी सी बात। लेकिन उसको आप खुद उस चीज को देखो, जानो, तब पता चलेगा क्या था। तो 3 साल ऐसे चले गए, बातचीत करने लगे। फिर चिराग सर आए, चिराग सर ने फैमिली का सपोर्ट किया। फर्स्ट थिंग मेरी सिस्टर की स्टडी का किया, मैं घर पे नहीं था, मेरे फादर आर्मी एक्स सर्विसमैन है, मेरी मॉम हाउसवाइफ है, मेरी सिस्टर उस टाइम बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, तो फाइनेंशियली इसको सपोर्ट की सर ने, इतनी अच्छी नहीं थी। और मेरे फिर 6 मंथ और 9 मंथ के बाद मेरे पिताजी बीमार भी हो गए, तो चिराग सर ने हेल्प किया उनको, अच्छे पंजाब में अच्छे हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाया। तो मतलब इस्वान ने उस टाइम सर एनजीओ हैंडल करते थे, इन्होंने काफी सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मेडिकली, इवन घर के लिए खर्चे के लिए भी इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया। और उसके बाद इन्होंने होप भी दिलाया, चिराग सर ने मीटिंग भी करवाया डीजी सर से मुंबई में। और मतलब जो भी जैसे मेरे फादर को कोई जैसे पता नहीं था कि कहाँ पे अप्रोच करना है, कैसे करना है सिस्टमेटिकली, तो उसी हिसाब से सर ने बताया कि ऐसे आओ, मीटिंग करवाया। डायरेक्टर जनरल शिपिंग मिस्टर दीपक शेट्टी सर थे उस टाइम, और अपना गनी सर थे न्यूसी के, नेशनल सीफेयर यूनियन ऑफ इंडिया के। तो मतलब सर सबके साथ टच हुआ, तो सभी ने यही मतलब होप दिया फैमिली को कि डोंट वेरी, हम काम कर रहे हैं इस चीज पे, और आपका बेटा जल्दी ही कर आएगा। तो मेरी मॉम डैड के साथ और भी एसवर्ल्ड वेंचर के 7 फैमिलीज थी, और एक दो शिप के थे। तो चिराग सर उस टाइम मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही थे, जैसे सिर्फ मेरे को लाएंगे, मेरा कोई मतलब खून का रिश्ता, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में कोई अपना खून का रिश्ते वाला भी इतना नहीं करता जितना चिराग सर ने मेरे लिए किया और मेरी फैमिली के लिए। और जो बाकी के साथ, ये भी नहीं मैं बोलता कि सिर्फ मेरे लिए किया, जो साथ थे उनके लिए भी, जिस जिस हिसाब से मैं आया उसी से सेम थे 7 जो अदर थे, उनको भी उनकी फैमिली तक सर ने सेफली पहुंचाया। उसके बाद 3 इयर्स हो गए। 2013 में हमारा शिप सिंक हो गया। रात का टाइम था 2013, बट जब कैप्टन चला गया, 1 साल हमने जंगल में निकाला, वो बहुत ही कठिन टाइम था। टॉर्चर, खाना नहीं, पीना नहीं, नहाना 45-45, 50-50 दिन तक कहीं नहाना नहीं होता था। तो वो भी जंगल में, जब पानी से पीने के लिए पानी लेने जाना 5 किलोमीटर रेगिस्तान में, उधर से एक जग से हमने नहाना, सिर्फ वही पानी पीने के लिए लाना। खाना रात को बनाना 3 पत्थर रख के, आज रात को इधर दिया, फैमिली के साथ फोन कॉल किया बात करने के लिए, 3 दिन के बाद उस लोकेशन में नहीं हमें रखेंगे ये लोग, हमें उस लोकेशन को चेंज कर देंगे। तो मतलब वो एक लोकेशन ही रखते थे, उन्हें डर रहता था कि कोई रात को अटैक करके हमें ना ले जाए, तो वो लोकेशन चेंज कर देते थे, मतलब हमेशा रोमिंग में। बट उनका मूड का पता नहीं होता था कि कब आपको ले जाएंगे और कब टॉर्चर करेंगे। इवन आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, आप खाना भी बना के देते हो, आप उसकी हर कुछ हेल्प करते हो, उनके कपड़े भी धोते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे जब उनके बॉस आ जाएंगे, क्या तो वही बंदा आपको टॉर्चर करेगा। वो फ्रेंड्स किसी के नहीं होते, वो फ्रेंड्स सिर्फ एक चीज है, पैसे के। लेकिन पैसा भी आज बोले कि मेरी डिमांड फिर अकेले की रही है, पाकिस्तान चला गया तो बोलते कि अकेले अकेले बंदे से पैसे लेंगे, इंडियन से नेगोशिएट अलग करेंगे, बांग्लादेश से अलग, श्रीलंका से अलग, ईरान से अलग। तो जब हम टोटली 22 मेंबर थे, 7 पाकिस्तानी, 22 सॉरी, 7 पाकिस्तानी चले गए, हम 15 रह गए। तो 2013 को हमारा शिप सैंक हो गया, तो उसमें 4 श्रीलंकन डूब गए। तो हम टोटल 11 बचे, रात को 7:30 बजे की बात है। तो पीछे एक हमारे फिशिंग बोट था नाम थ्री करके, तो हम उस पे रात को तैर के उस पे चढ़ गए। तो हम 11 क्रू मेंबर बचे, पायलट सारे डूब गए, लेकिन जो हमारे पायलट हेड कमांडर थे और उनके बॉसेस थे वो बाहर रहते थे, वो अगले दिन आए, हमें देखा, फिर हमसे घर पे फोन करवाया बात करने के लिए। तो हमने घर वालों को तो पहले पता चल गया था, तो घर वालों ने चिराग सर से बात की थी, लेकिन चिराग सर ने पहले ही बता दिया था उनको कि आप चिंता मत करो, दे एवरीबॉडी सेफ। फिर उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे के बाद फोन किया, तो घर वाले तो परेशान थे क्योंकि नेट पे न्यूज तो पहुंच चुकी थी, तो मतलब घर पे चहल पहल इसकी मच चुकी थी। फिर मैंने घर पे बात किया, मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम सेफ हैं, फिशिंग बोट में हैं, शिप हमारा डूब गया और हम 11 बंदे हैं।
फिर उसके बाद किसी ने बताया कि यूनाइटेड नेशन आपके साथ बात करना चाहता है। तो मिस्टर जॉनस्टन था यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने मेरे साथ बात किया। अमन कुमार, मैंने कहा जैसे सर, अमन कुमार बोलते मैं यूनाइटेड नेशन से, जो भी उनका रैंक था मैं फॉरवर्ड, तो मैं ये बोल रहा हूँ उनका ओके। फिर उनके साथ बात किया, उन्होंने बोला कि हमारा काफी एनजीओ के साथ कांटेक्ट है और ऐसे वैसे जो भी है। लेकिन जो पायरेसी, मतलब उस टाइम तो पता नहीं चल रहा था किससे बात करनी है, कोई है, क्योंकि 3 साल जा चुके थे। फिर मतलब 3 मंथ ऐसे चले गए यूनाइटेड नेशन से बात करनी, वो कभी अमाउंट बताते थे, कभी बोलते थे कि यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग ओनली द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, दे विल नॉट पे द मनी एंड ऑल दैट, and sometime they was talking about the ransom, still I don't know। बट आस्ते आस्ते उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने जो भी रैंसम था उन्होंने दिया। उसी में कोई एक जर्मन का था कैप्टन, जिसने एनजीओ में फंड इकट्ठा किया था। तो इन्होंने डील फाइनल किया था $900,000 में। तो $500,000 ये सारी एनजीओ यूरोप में इकट्ठा किया था उस कैप्टन ने। और लास्ट में जब पैसे देने का डील फाइनल किया था 14 अप्रैल, तो लास्ट में बोला कि वो कस्टम में पकड़ा गया जर्मन में, और वो बंदा क्या बोलते फ्लाइट में इम्बार्केशन नहीं कर सका, और उसके सारी जो मनी थी वो ऐसे ऐसे जो भी थे। तो हमारे पास फिर लास्ट कॉल आई हमें 13 अप्रैल को नाइट को, हमारे पास ये मनी है 2.5 200,000 $250,000। उनकी डील हुई थी $900,000 में, तो लास्ट में ये बोले 50,000 तो फिर वो बोलते कि ये क्या है, कल अगले कल आपको लेके जाने का प्लान है, सारे पेपर साइन हो चुके हैं, $900,000 में डील फाइनल हुआ, लास्ट में ये क्या। तो वो रात, टच वुड बोल रहा हूँ किसी के साथ ना हो, वो रात मतलब सबसे मतलब अनबिलीवेबल नाइट थी हमारे लिए। क्योंकि पहले ऑनर खेलता रहा कि हम इतने पैसे देंगे इतने देंगे, लास्ट में नहीं दिया, वो डिसअपियर हो गया, उसके बाद बात नहीं की। जब शिप हमारा डूब गया उससे पहले 10 दिन पहले बात किया, तो वो किसी को पूछता हाउस माई शिप, बट इट डजंट आस्क हाउस माई क्रू। So that time everybody was thinking he is caring only about his ship, not about his crew। तो हमने इतना माइंड नहीं किया, अब क्या कर सकते, 3 साल तो उधर हैं, टॉर्चर केस देख, फिर आदत सी पन पड़ी, किसको रोए। रोने का भी एक टाइम था, रो के भी देख लिया, ना खा के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, फल उसका मतलब रिजल्ट फिर जीरो के बराबर मिला। तब फाइनली आई थिंक अमन तक आप वापस आए 2014 में, आप वापस आ पाए सभी लोगों की मदद की वजह से। बहुत लोगों ने इसमें मदद की, कई नोन फेसेस हैं आपके सामने, कई अननोन फेसेस हैं जो जी जो सर। सामने नहीं आए, और पीछे से जिन्होंने सपोर्ट करा, पीछे से जिन्होंने वर्कआउट करी ये सब चीजें, नेगोशिएट करा सही बाइट्स का, जिस तरह से आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे हुआ कि आप घर पहुंच पाए ठीक तरह। और सिर्फ आप नहीं, सभी आपके जो बाकी क्रू मेंबर्स थे वो उन सबको भी, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी हॉरिफिक स्टोरी। कई सीफेयर्स के साथ हुआ, थोड़े काफी लोग हमारे सीफेयर्स के साथ कंपनीज ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, बट थोड़े चुनिंदा ऐसे सीफेयर्स रहे जिनके साथ पूरा अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल पाया। और वापस आने के बाद भी आप लोगों के साथ भी काफी मतलब आप लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, इस वजह से कि आप आगे शिपिंग लाइन में कैसे बढ़ेंगे। डीजी शिपिंग ने बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिवली आप लोगों के केस में बहुत काम किया। Now बहुत the ज्यादा। sea time of seafarers was been counted, so that these seafarers can now again rejoin their ships. They can again appear for higher exams. They do not have to feel that they are left behind, and their colleagues, their friends have already moved on. So that was made sure by the D-shipping that these all people will be given priorities, documents, because इनके documents expire हो गए थे, इनके documents वहीं पे रह गए थे, तो उसके बाद प्रायोरिटी बेसिस पे पासपोर्ट, सीडीसी, ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनको वापस री इशू होके गए। आप आज एप्लीकेशन दोगे और कल डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास आ जाते थे। तो दैट काइंड ऑफ फास्ट प्रोसेस वाज बीन डन डी शिपिंग की तरफ से, और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत आगे जाकर इन सभी सीफेयर्स का मदद करा। और आज आई एम वेरी प्राउड टू से दैट अमन जैसे और भी कितने लड़के हैं जो वापस शिप पर गए हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को और सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर अवर रियल हीरोज हु आर एट सी। एंड इन लोग अभी इन्हीं सब ने इतना रेजिलियंस होने के बाद, इतना सब बुरा देखने के बाद भी आज भी वो खड़े हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक वी ऑल शुड हैव काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज सीफेयरर्स हु आर एट सी।
and who are still serving the ships and the entire world. So thank you. I think अमन, आपने इतना हॉरिफिक इंसिडेंट अपना बताया, सब चीजें आपने हमारे सामने रखी। हम लोग सही में मतलब कोई वर्ड्स नहीं है जो आप लोगों ने सहन करा, जो आपकी फैमिली ने उस वक्त सहन करा। वे रियली वेरी बहुत डिसअपॉइंट हैं उस चीज से जो हुई, बट आज आपको देख के, और आप बिल्कुल ठीक हैं, हमारे बीच में हैं और आगे कितना बढ़ चुके हैं। 10 साल, ऑलमोस्ट 7-8 years हो गए हैं आपको वापस आके, और उसके बाद आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू अमन, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग अहेड, कीप मेकिंग अस प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you अस so अमन। much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हैं, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, इफ दे कैन हैव पुट अप इन द चैट बॉक्स प्लीज, वी आर हैप्पी टू टेक ऑन एनी क्वेश्चंस इफ यू मे हैव। एंड दिस सेशन हैज बीन ओवररन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अमन की जो स्टोरी उन्होंने अपनी बताई, और आई एम श्योर अमन की स्टोरीज आपको कहीं और भी बहुत जल्दी दिखेंगी। आई रियली होप कि हम लोगों के पास पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में अमन आपकी स्टोरी आए, जिसमें आई नो कुछ काम चल रहा है। कई बुक्स में अमन की स्टोरीज के बारे में बताया गया है। if you would like to read about his full story, how he went through, what all efforts have been taken, lot of books are there जो कि बनाई गई हैं, जिनके ऊपर लिखी गई हैं, और आप उनको भी देख सकते हैं। मेरे को अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नजर नहीं आया है। सो आई वुड से थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस पेशेंटली दिस सेशन। एज अमन ने भी बोला, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पायरेसी इंसिडेंट्स में, अगर आप इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, if you know what you have to do and you are taking care of your entire crew as well, mitigate the risk, follow the right procedures and practices, keep on preparing yourself and the crew members, I think you will be able to survive and there will be no problems at all. आप लोग अच्छी तरह विदाउट अटैक से भी आप लोग निकल सकते हैं। लॉट ऑफ शिप्स दे हैव टेकन गुड केयर इन दैट प्रोसेस। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज फॉलो द राइट प्रोसीजर्स, कीप ट्रेनिंग योर क्रू मेंबर्स, and be vigilant whenever you are in any kind of high risk areas. Thank you everyone for joining us in this session. I hope aap sabhi ko you'll have feel a little bit aware, and hopefully these important things will not deter your spirits from going on ships, because I think seafaring is a very very exciting careers, and आप अमन से सीख ले सकते हैं। जिस तरह से अमन अभी भी इतना सब होने के बाद भी वापस ही इज स्टिल एट सी, इज जॉइनिंग द शिप नेक्स्ट मंथ। सो हमें लगा कि इस बार उनको हम लोग किस तरह पकड़ लें और अपने सेशन में ले आए आज। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। टेक केयर, ऑल द